जानू ना माजरा वही है मेहमान यहाँ हर कोई ढूंढूं मैं अपना कोई जागा जो सपना वही सपना ढूंढे जो खुद को है नादान मंदिर मजारों में मैं काफिर मैं बदजुबान किससे हुए कितने तमाम दिल के किनारों में दिल बुज़दिल दिल बेईमान जानू ना माजरा वही है मेहमान यहाँ हर कोई ढूंढूं मैं अपना कोई जागा जो सपना वही Let's look at how you can implement feature scaling to take features that take on very different ranges of values and scale them to have comparable ranges of value to each other. So how do you actually scale features? Well, if x1 ranges from 3 to 2000, one way to get a scale version of x1 is to take each original x1 value and divide by 2000 the maximum of the range. So the scaled x1 will range from 0.15 up to 1. Let's look at how you can implement feature scaling to take features that take on very different ranges of values and scale them to have comparable ranges of value to each other. So how do you actually scale features? Well, if x1 ranges from 3 to 2000, one way to get a scale version of x1 is to take each original x1 value and divide by 2000 the maximum of the range. So the scaled x1 will range from 0.15 up to 1. Similarly, since x2 ranges from 0 to 5, you can calculate a scale version of x2 by taking each original x2 and dividing by 5, which is, again, the maximum. So the scale x2 will now range from 0 to 1. So if you plot the scaled x1 and let's look at how you can implement feature scaling. Scaling. This is another very important step to pre-processing your dataset for machine learning. Let's jump right into it. So here's an example of two feature columns that you might see in a dataset. Clearly, if you just take a look here, the two numbers range very differently. So on the left here for feature A, you have 5 to 25, but for feature B, you have 20,000 to 50,000. They clearly have a very different range of numbers. That's not good because some machine learning algorithms will interpret the data in a way where the second column, because it has a much larger range, will overpower the first. Therefore, we need to employ something called feature scaling, which simply means that we have to have all the features of our dataset on the same scale or in a consistent value range, but at the same time maintaining their meaning. So there are two major methods to feature scaling. You have normalization and standardization.
Normalization, also known as min-max scaling, will shift and scale the values within the features to a range of 0 to 1, or for example, -1 to 1. You can actually customize the range when you use something like the min-max scaler from scikit-learn, but the default is going to be 0 to 1. So this means that every single value in that column, or all columns that you apply this to, will be within that 0 to 1 range. So here's the actual formula that you can use to calculate every single value. So you have the new x is going to be equal to the original x minus the minimum x over the max x minus the minimum x. And the minimum and the maximum are just the minimum values within the entire column or feature. So applying this formula across every single value in a column will give you that range I told you about. Standardization, also known as z-score normalization, will use a different formula down here to transform the data to have a mean of 0 and also a standard deviation of 1. So this formula is the new x is equal to the original x minus the mean divided by the standard deviation. Both of these here will do feature scaling for you. They differ in how it works and also in what situations you should probably use one of these two. So here's what the data could look like after it's standardized and normalized. So if we have this input column 0, 1, 2, 3, 4, 5, if we standardize it, this will be what the values can look like. So you can see it's also going in the negative direction now. But they're much smaller, so in a much smaller range. And then if we normalize it, this is what the values will look like if we do it from 0 to 1. And of course, this is only showing one column just to illustrate how the data would look like. But the whole point of feature scaling as well is to make sure that all the feature columns are standardized, or feature scaled rather, to the same range of numbers. That way certain columns do not overpower other columns, okay? So the main question you may have is, what is the difference between normalization and standardization, and in what situations should you use either one? Here's a little table that I found that shows you the major differences that you can just take a look at here. So for normalization, it rescales the values to range between 0 and 1, by default at least. It's useful when the distribution of the data is unknown or not Gaussian. I think I'm saying that correctly, hopefully. Normalization is also sensitive to something called outliers, which are values that fall out the normal range of values in your dataset. It retains the shape of the original distribution. It may not preserve the relationships between the data points, and the equation is different, of course. Standardization centers the data around the mean and then scales it to a standard deviation of 1. It's useful when the distribution of the data is Gaussian or unknown, so in either situation you could use scaling to take features that take on very different ranges of values and scale them to have comparable ranges of value to each other. So how do you actually scale features? Well, if x1 ranges from 3 to 2000, one way to get a scale version of x1 is to take each original x1 value and divide by 2000, the maximum of the range. So the scale of x1 will range from 0.15 up to 1. Similarly, since x2 ranges from 0 to 5, you can calculate a scale version of x2 by taking each original x2 and dividing by 5, which is, again, the maximum. So the scale x2 will now range from 0 to 1. So if you plot the scaled x1 and x2 on a graph, it might look like this. In addition to dividing by the maximum, you can also do what's called mean normalization. So what this looks like is, you start with the original features, and then you rescale them so that both of them are centered around 0. So whereas before they only had values greater than 0, now they have both negative and positive values, but maybe usually between -1 and +1. So to calculate the mean normalization of x1, first find the average, also called the mean of x1 on your training set, and let's call this mean mu1, with this being the Greek alphabet mu. For example, you may find that the average of feature 1, mu1, is 600 square feet. So let's take each x1, subtract the mean mu1, and then let's divide by the difference 2000 minus 300, where 2000 is the maximum and 300 the minimum. And if you do this, you get the normalized x1 to range from negative 0.18 to 0.82. Similarly, to mean normalized x2, you can calculate the average of feature 2, and for instance, mu2 may be 2.3. Then you can take each x2, subtract mu2, and divide by 5 minus 0. Again, the max 5 minus the min, which is 0. The mean normalized x2 now ranges from
negative 0.46 to 0.54. So if you plot the training data using the mean normalized x1 and x2, it might look like this. There's one last common rescaling method called z-score normalization. To implement z-score normalization, you need to calculate something called the standard deviation of each feature. If you don't know what the standard deviation is, don't worry about it. You won't need to know it for this class. Or if you've heard of the normal distribution or the bell-shaped curve, sometimes also called the Gaussian distribution, this is what the standard deviation for the normal distribution looks like. But if you haven't heard of this, you don't need to worry about that either. But if you do know what is the standard deviation, then to implement a z-score normalization, you first calculate the mean mu as well as the standard deviation, which is often denoted by the lowercase Greek alphabet sigma of each feature. So for instance, maybe feature 1 has a standard deviation of 450 and mean 600. Then to z-score normalize x1, take each x1, subtract mu1, and then divide by the standard deviation, which I'm going to denote as sigma 1. And what you might find is that the z-score normalized x1 now ranges from negative 0.67 to 3.1. Similarly, if you calculate the second feature's standard deviation to be 1.4 and mean to be 2.3, then you can compute x2 minus mu2 divided by sigma 2. And in this case, the z-score normalized by x2 might now range from negative 1.6 to 1.9. So if you plot the training data on the normalized x1 and x2 on a graph, it might look like this. As a rule of thumb, when performing feature scaling, you might want to aim for getting the features to range from maybe anywhere around negative 1 to somewhere around plus 1 for each feature x. But these values, negative 1 and plus 1, can be a little bit loose. So if the features range from negative 3 to plus 3 or negative 0.3 to plus 0.3, all of these are completely okay. So if you have a feature x1 that winds up being between 0 and 3, that's not a problem. And you can rescale it if you want, but if you don't rescale it, it should work okay too. Or if you have a different feature, x2, whose values are between negative 2 and plus 0.5, again, that's okay. No harm rescaling it, but it might be okay if you leave it alone as well. But if another feature, like x3 here, ranges from negative 100 to plus 100, then this takes on a very different range of values than something from around negative 1 to plus 1. So you're probably better off rescaling this feature x3 so that it ranges from something closer to negative 1 to plus 1. Similarly, if you have a feature x4 that takes on really small values, say between negative 0.001 and plus 0.001, then these values are so small. That means you may want to rescale it as well. Finally, what if your feature x5, such as measurements of a hospital patient's body temperature, ranges from 98.6 to 105 degrees Fahrenheit? In this case, these values are around 100, which is actually pretty large compared to other scale features, and this will actually cause gradient descents to run more slowly. So in this case, feature rescaling will likely help.
there's almost never any harm to carrying out feature rescaling. So when in doubt, I encourage you to just carry it out. And that's it for feature scaling. With this little technique, you'll often be able to get gradient descent to run much faster. So that's feature scaling. And with or without feature scaling, when you run gradient descent, how can you know? How can you check if gradient descent is really working, if it is finding you the global minimum or something close to it? In the next video, let's take a look at how to recognize if gradient descent is converging. And then in the video after that, this will lead to a discussion of how to choose a good learning rate for gradient descent. When running gradient descent, how can you tell if it is converging? That is, whether it's helping you to find parameters close to the global minimum of the cost function. By learning to recognize what a well-running implementation of gradient descent looks like, we will also, in a later video, be better able to choose a good learning rate alpha. Let's take a look. As a reminder, here's the gradient descent rule, and one of the key choices is the choice of the learning rate alpha. Here's something that I often do to make sure that gradient descent is working well. Recall that the job of gradient descent is to find parameters w and b that hopefully minimize the cost function j. So what I often do is plot the cost function j, which is calculated on the training set, and I'll plot the value of j at each iteration of gradient descent. Remember that each iteration means after each simultaneous update of the parameters w and b. So in this plot, the horizontal axis is the number of iterations of gradient descent that you've run so far. And so you may get a curve that looks like this. Notice that the horizontal axis is the number of iterations of gradient descent and not a parameter like w or b. This differs from rate alpha. Let's take a look. As a reminder, here's the gradient descent rule, and one of the key choices is the choice of the learning rate alpha. Here's something that I often do to make sure that gradient descent is working well. Recall that the job of gradient descent is to find parameters w and b that hopefully minimize the cost function j. So what I often do is plot the cost function j, which is calculated on the training set, and I'll plot the value of j at each iteration of gradient descent. The job of gradient descent is to find parameters w and b that hopefully minimize the cost function j. So what I often do is plot the cost function j, which is calculated on the training set, and I'll plot the value of j at each iteration of gradient descent. Remember that each iteration means after each simultaneous update of the parameters w and b. So in this plot, the horizontal axis is the number of iterations of gradient descent that you've run so far. And so you may get a curve that looks like this. Notice that the horizontal axis is the number of iterations of gradient descent and not a parameter like w or b. This differs from previous graphs you've seen, where the vertical axis was cost j and the horizontal axis was a single parameter like w or b. This curve is also called a learning curve. Note that there are a few different types of learning curves used in machine learning, and you'll see some of the types later in this course as well. Concretely, if you look at this point on the curve, this means that after you've run gradient descent for 100 iterations, meaning 100 simultaneous updates of the parameters, you have some learned values for w and b. And if you compute the cost, jwb, for those values of w and b,
the ones you got after 100 iterations, you get this value for the cost j, that is, this point on the vertical axis. And this point here corresponds to the value of j for the parameters that you got after 200 iterations of gradient descent. So looking at this graph helps you to see how your cost j changes after each iteration of gradient descent. If gradient descent is working properly, then the cost j should decrease after every single iteration. If j ever increases after one iteration, that means either alpha is chosen poorly, and it usually means alpha is too large, or there could be a bug in the code. Another useful thing that this plot can tell you is that if you look at this curve, by the time you reach maybe 300 iterations or so, the cost j is leveling off and is no longer decreasing much. And by 400 iterations, it looks like the curve has flattened out. So this means that gradient descent has more or less converged because the curve is no longer decreasing. So looking at this learning curve, you can try to spot whether or not gradient descent is converging. By the way, the number of iterations that gradient descent takes to converge can vary a lot between different applications. In one application, it may converge after just 30 iterations. For a different application, it could take 1,000 or 100,000 iterations. It turns out to be very difficult to tell in advance how many iterations gradient descent needs to converge, which is why you can create a graph like this, a learning curve, to try to find out when you can stop training your particular model. Another way to decide when your model is done training is with an automatic convergence test. So let's let epsilon, this here is the Greek alphabet epsilon, let's let epsilon be a variable representing a small number, such as 0.001 or 10 to the power of -3. If the cost j decreases by less than this number epsilon on one iteration, then you're likely on this flattened part of the curve that you see on the left, and you can declare convergence. Remember, convergence hopefully indicates that you found parameters w and b that are close to the minimum possible value of j. I usually find that choosing the right threshold epsilon is pretty difficult, so I actually tend to look at graphs like this one on the left rather than rely on automatic convergence tests. Looking at this sort of figure can tell you or give you some advance warning if maybe gradient descent is not working correctly as well. So you've now seen what the learning curve should look like when gradient descent is running well. Let's take these insights and in the next video, take a look at how to choose an appropriate learning rate. Your learning algorithm will run much better with an appropriate choice of learning rate. If it's too small, it would run very slowly. And if it's too large, it may not even converge. Let's take a look at how you can choose a good learning rate for your model. Concretely, if you plot the cost for a number of iterations and notice that the cost sometimes goes up and sometimes goes down, you should take that as a clear sign that gradient descent is not working properly. This could mean that there's a bug in the code, or sometimes it could mean that your learning rate is too large. So here's an illustration of what might be happening. Here, the vertical axis is a cost function j, and the horizontal axis represents a parameter like maybe w1. And if the learning rate is too big, then if you start off here, your update step may overshoot the minimum and end up here. And in the next update step here, you're again overshooting, so you end up here, and so on. And that's why the cost can sometimes go up instead of decreasing. To fix this, you can use a smaller learning rate. So then your updates may start here and go down a little bit and down a bit, and will hopefully consistently decrease until it reaches the global minimum. Sometimes you may see that the cost consistently increases after each iteration,
like this curve here. This is also likely due to a learning rate that is too large, and it could be addressed by choosing a smaller learning rate. But learning rates like this could also be a sign of a possible bug in the code. For example, if I wrote my code so that W1 gets updated as W1 plus alpha times its derivative term, this could result in the cost consistently increasing at each iteration. And this is because adding the derivative term moves your cost j further from the global minimum instead of closer. So remember, you want to use a minus sign, so the code should be updated W1 updated by W1 minus alpha times the derivative term. One debugging tip for a correct implementation of gradient descent is that with a small enough learning rate, the cost function should decrease on every single iteration. So if gradient descent isn't working, one thing I will often do, and I hope you find this tip useful too, one thing I'll often do is just set alpha to be a very, very small number and see if that causes the cost to decrease on every iteration. If, even with alpha set to a very small number, j doesn't decrease on every single iteration, but instead sometimes increases, then that usually means there's a bug somewhere in the code. Note that setting alpha to be really, really small is meant here as a debugging step, and a very, very small value of alpha is not going to be the most efficient choice for actually training your learning algorithm. One important trade-off is that if your learning rate is too small, then gradient descent can take a lot of iterations to converge. So, when I am running gradient descent, I will usually try a range of values for the learning rate alpha. So I might start by trying a learning rate of 0.001, and I might also try a learning rate that's 10 times as large, say 0.01 and 0.1 and so on. And for each choice of alpha, you might run gradient descent just for a handful of iterations and plot the cost function j as a function of the number of iterations. And after trying a few different values, you might then pick the value of alpha that seems to decrease the learning rate rapidly, but also consistently. In fact, what I actually do is try a range of values like this. After trying 0.001, I'll then increase the learning rate threefold to 0.003, and after that, I'll try 0.01, which is again about 3 times as large as 0.003. So these are roughly trying out gradient descent with each value of alpha being roughly 3 times bigger than the previous value. So what I'll do is try a range of values until I found a value that's too small, and then also make sure I found a value that's too large. And I'll slowly try to pick the largest possible learning rate, or just something slightly smaller than the largest reasonable value that I found. And when I do that, it usually gives me a good learning rate for my model. So I hope this technique too will be useful for you to choose a good learning rate for your implementation of gradient descent. In the upcoming optional lab, you can also take a look at how feature scaling is done in code and also see how the choice of features can have a huge impact on your learning algorithm's performance. In fact, for many practical applications, choosing or engineering the right features is a critical step to making the algorithm work well. In this video, let's take a look at how you can choose or engineer the most appropriate features for your learning algorithm. Let's take a look at feature engineering by revisiting the example of predicting the price of a house. Say you have 2 features for each house. X1 is the width of the lot size of the plot of land that the house is built on. This in real estate is also called the frontage of the lot. And the second feature, X2, is the depth of the lot size of, let's assume, the rectangular plot of land that the house was built on. Given these 2 features, X1 and X2, you might build a model like this, where f of x is w1x1 plus w2x2 plus b, where x1 is the frontage or width and x2 is the depth. And this model might work okay.
But here's another option for how you might choose a different way to use these features in the model that could be even more effective. You might notice that the area of the land can be calculated as the frontage or width times the depth. And you may have an intuition that the area of the land is more predictive of the price than the frontage and depth as separate features. So you might define a new feature x3 as x1 times x2. So this new feature x3 is equal to the area of the plot of land. With this feature, you can then have a model fwb of x equals w1x1 plus w2x2 plus w3x3 plus b, so that the model can now choose parameters w1, w2, and w3 depending on whether the data shows that the frontage or the depth or the area x3 of the lot turns out to be the most important thing for predicting the price of the house. What we just did, creating a new feature, is an example of what's called feature engineering, in which you might use your knowledge or intuition about the problem to design new features, usually by transforming or combining the original features of the problem in order to make it easier for the learning algorithm to make accurate predictions. So depending on what insights you may have into the application, rather than just taking the features that you happen to have started off with, sometimes by defining new features, you might be able to get a much better model. So that's feature engineering. And it turns out that there's one flavor of feature engineering that will allow you to fit not just straight lines, but curves, nonlinear functions to your data. Let's take a look in the next video at how you can do that. See how different choices of the learning rate alpha can lead to either better or worse training of your model. I hope you have fun playing with the value of alpha and seeing the outcomes of different choices of alpha. So please take a look and run the code in the optional lab to gain a deeper intuition about feature scaling, as well as for alpha. It will also allow you to fit curves, not just a straight line, to your data. So far, we've just been fitting straight lines to our data. Let's take the ideas of multiple linear regression and feature engineering to come up with a new algorithm called polynomial regression, which will let you fit curves, nonlinear functions, to your data. Let's say you have a housing data set that looks like this, where feature x is the size in square feet. It doesn't look like a straight line fits this data set very well. So maybe you want to fit a curve, maybe a quadratic function to the data like this, which includes a size x and also x squared, which is the size raised to the power of 2. And maybe that'll give you a better fit to the data. But then you may decide that your quadratic model doesn't really make sense because the quadratic function eventually comes back down. And, well, we wouldn't really expect housing prices to go down when the size increases, right? Big houses seem like they should usually cost more. So then you may choose a cubic function, where we now have not only x squared, but x cubed. So maybe this model produces this curve here, which is a somewhat better fit to the data because the size does eventually come back up as the size increases. These are both examples of polynomial regression because you took your original feature x and raised it to the power of 2 or 3 or any other power. And in the case of the cubic function, the first feature is the size, the second feature is the size squared, and the third feature is the size cubed. I just want to point out one more thing, which is that if you create features that are these powers, like the square of the original features like this, then feature scaling becomes increasingly important. So if the size of the house ranges from, say, 1 to 1,000 square feet, then the second feature, which is the size squared, would range from 1 to 1,000,000, and the third feature, which is size cubed, ranges from 1 to 1,000,000,000. So these two features, x squared and x cubed, take on very different ranges of values compared to the original feature x. And if you're using gradient descent, it is important to apply feature scaling to get your features into comparable
ranges of values. Finally, here's one last example of how you really have a wide range of choices of features to use. Another reasonable alternative to taking the size squared and size cubed is to, say, use the square root of x. So your model may look like w1 times x plus w2 times the square root of x plus b. The square root function looks like this, and it becomes a bit less steep as x increases, but it doesn't ever completely flatten out, and it certainly never ever comes back down. So this would be another choice of features that might work well for this dataset as well. So you may ask yourself, how do I decide what features to use? Later, in the second course in the specialization, you see how you can choose different features and different models that include or don't include these features, and you have a process for measuring how well these different models perform to help you decide which features to include or not include. For now, I just want you to be aware that you have a choice in what features you use, and by using feature engineering and polynomial functions, you can potentially get a much better model for your data. In the optional lab that follows this video, you will see some code that implements polynomial regression using features like. And I also look forward to seeing you in next week's videos, where we'll go beyond. I'll see you next week.
दुःखको भारी बिसाइदे तेरो तातेको टाउकोमा थोरै पानी मिसाइदे ऐना हेर्चा त्यसमा देखेको चोरलाई जिस्काइदे एउटा बोतलमा पानी बोक अनि पुरै रित्ताइदे हिजोको झगडा अनि आजको घण्टा जस्तो दिन त्यो हेक्टिक सेरो तेरो फुट्छ छैन एकछिन त्यो अनेक थरीको टेन्सन अनि के हो के भए छोड्दे लामो सास फेर मजाले एक सेकेन्ड त्यो गुच्चेको मुखलाई एकछिन खुलाएर हाँस्न पुरै जिन्दगी बाँकी छ एकछिन रमाएर बाँच्न तेरो दुखेको जिउ अनि थाकेको खुट्टा गनाउने मोजा फाल्दै साइडमा पर्दैन बोन लुका अनि बस आँखा बन्द गर्दै फोनलाई पनि फालिदेन हेर त कसको फोन आयो छोड्दै काटिदेन सल्काउने कि एक सरको प्याकेट खोल्दै बालिदेन भित्रसम्म तान अनि माथि हेर्दै फालिदेन हेर त आकाश कस्तो निलो अनि बादलको त्यो टुक्रा त्यो हाँसिरहेको सूर्य अनि उडिरहेको चरा त्यो चिसो चिसो हावा अनि हरियो हरियो रुख त्यो सब देख्दा पनि किन उदास तेरो मुख तेरो बाउले किचकिच गर्यो गर्लफ्रेन्डले छोड्यो झगडा पर्यो कि आफन्त कुनै मर्यो तर यति कुरा बुझ्न अझै हुनु छ भयो तेरो हातमा के छ र साले बेकार ठस्स पर्यो 2 दिनको जिन्दगी छ एक दिन हिजै बितिसक्यो आजको के बढ्छ र सोच त दिउँसो भइसक्यो त्यसैले दुःख बिर्सिदे रिसलाई पनि किल्चिदे पहेँलो दाँत देखाउँदै खुसी हुँदै हिँडिदे के रिस के राग त्यसलाई साइड लगाइदेन अरूको गल्ती भए पनि माफी मागिदेन अनि हेर तेरो जिन्दगी कति सुन्दर देखिन्छ त सबैको हुन्छ सबै तेरो भइदिन्छ Lay down तेरो टाउको भुइँमा राख्रे आकाशतिर हेर अनि सपना बुन्न थाल्रे त्यो चम्किरहेको तारा तेरो भविष्य हो सफलताले चुम्छ त्यसलाई अघि बढिरहन्छ जो त्यसैले बढ अघि बढ सधैँ खोला जस्तो भएर बाँच्यो जिन्दगीलाई हटेर होइन टटेर तेरै हातमा सब थोक छ समात्न मात्र सिक नबस सक्दिन भनेर जुरुक्क उठेर हिँड जिन्दगी कति कठोर छ यो समाज कति छुच्चो कुरा काट्नेको मुखमा हामीले लगाउनु छ बुझो गर्नु छ केही बन्नु छ हुनु छ सधैँ अगाडि राम्रो गर्नु छ सबैलाई राम्रो बाटो समाति तसँग के छैन होइन के चाहिँ छ भनी हेर्ने निराशामा डुब्नु भन्दा आशावादी हुनुपर्छ हामीले तँलाई अरू पर्फेक्ट छ आफू छैन जस्तो लाग्छ सोच त साले चन्द्रमामा पनि कति धेरै दाग छ मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँसा हामी सँगै त छौँ नि
हामी सँगै त छौँ नि यी मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि टाढा टाढा जानु पर्यो आज तिम्रो साथ छोडी माफी माग्छु हात जोडी सरी भन्छु लाखचोटि मन त थिएन जानलाई सोच्नु पर्यो आफ्नो नि नरौ तर तिम्रो लागि फर्किआउँछु अर्को दिन मलाई कहाँ मन थियो र जिन्दगीले हरायो परिस्थिति विपरीत खुडा टिक्न लगायो सबै थियो अँध्यारो सबै सोच्दा डर लाग्यो भविष्यले फकायो भाग्यले सगाए आज म मनमा ढुङ्गा राखी सपना बोकी हिँड्दैछु मलाई सम्झी याद आउला नाथ्यो म तिम्रै हुँ म हाम्रो लागि जिउँदैछु म हाम्रो लागि जाँदैछु हामी सँगै छौँ आँसु कहिले नछाड मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि यी मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि तिमीले त बुझ्छौ नि तिमी त हाँसिदेऊ न हाँसी हाँसी बिदा देऊ न भुल्दा हामी हिँड्या थियो एकअर्काको हातसम्म एकअर्काको साथसँगै एकअर्काको आठ बन्दै सात जन्मै बिताउला क्षणिकको दूरी यो केही दिनमै बिर्सौला नरहु तर तिम्रो आँसुले मलाई बिजाउँछ तिमीलाई दुखी देख्दा मेरो मन आफैसँग रिसाउँछ यो दूरी त केवल नामको त मात्र हो मेरो मनमा सधैँ तिमी सधैँलाई नै हुनेछौ तिमीलाई मेरो होइन मलाई तिम्रो खाँचो यस्तो मन मिल्ने मान्छे अन्त कहाँ पाउनु र फर्किआऊ तिमीसँग परिवार बसाउ मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि यी मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि दिन गन्दै बसौला हामी सधैँ बोलौला भविष्यबारे सोचौला तयार भई बस तिमी लैजान्छु तिमीलाई म आउँदा हाम्रो संसार बसौला खुसी भई बाँचौला जान देऊ मलाई अहिले सरी तिमी नरौ न हाम्रो माया दह्रो छ यो कहिले टुट्ने छैन म खुसी तिमी बिना कहिले हुने छैन त्यसैले यो कुरा तिमीले बुझ्नु पर्छ बलियो हुनु पर्छ हाम्रो माया भुल्नु हुन्न हामीले जुट्नु पर्छ भोलिलाई सोचेर जाँदैछु म आज तिमीलाई छोडेर भनी नसोच म तिम्रै हुँ अनि मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि यी मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि मेरा शब्दहरू तिमी सधैँ मनमा नै राख नठान हाम्रो साथ छुट्यो मन खोली हाँस हामी सँगै त छौँ नि हामी सँगै त छौँ नि हम दोनों पढ़े फैज हमें मिलते इससे फैज नहीं जिंदगी शेर जिसमें वजन काफिया है ही नहीं समंदर के किनारे बैठे हैं और पाँव गीले लेके आया पानी उन्होंने कहा आप पी लें आप जनाब बड़े प्यार से बुलाती थी वो चली गई तो लगा प्यार करने वाला नहीं है उसके एक सवाल पे मैं लाजवाब आज जवाब है मेरे पास सवाल करने वाला नहीं है याद है पहले रोज कहा था वफा करेंगे एक दूसरे को चाहता तुमसे कहा था कि सॉरी नहीं करना कभी ये दिल एक ताला उसमें चोरी नहीं करना कभी उसी जुर्म में तू आज भी रातें जागती है पहले तू भागती थी रिप्लाई तू मांगती है पहले तैमूर फेमस नहीं था अभी भी फेमस नहीं है पहले तू मेरी थी सिर्फ अब तू कहीं की नहीं है
सोच में, एक आवाज भी निकालती तू मुंह से। तुम मुझसे पूछती थी ताल्लुक क्या है मेरा तेरा, मैं बोलता था जो जिस्म का है रूह से। उम्र कट गई है तेरे इंतजार में, कीमत तो कीमत नहीं थी लगती हजार में। सारी बातों का सिर्फ एक ही अफसोस, दिल से निकल कर तू जा बैठी बाजार में। मेरी दास्तां को किया नहीं कबूल, मेरी वफा सारी उसके लिए फजूल। बची कोई आस नहीं तो अब इतना बता, मैंने चाहा तुझे क्या ये मेरी भूल। मेरे दिमाग में वो चल रहे हैं सवाल तेरे, मेरे जहन में क्यों आते हैं ख्याल तेरे। मायार तेरे पे मैं उतरा नहीं, तेरे लाख समझाने पर भी मैं सुधरा नहीं। मेरी गलती तो मेरी वजह, तेरी गलती तो मैं क्यों वजह। मंजिल तो पता है पर रास्ता नहीं जाने का, रास्ता ढूंढ भी लो वास्ता नहीं है जाने का। अब किसी से मेरा हिसाब नहीं है, मेरी आंखों में देख यहाँ कोई ख्वाब नहीं है। खून के घूंट पी रहा हूँ मैं रात दिन, ये मेरा खून है ये शराब नहीं है। मैं शराबी हूँ मेरी आस न छीन प्लीज, तू मेरी आस है शराब नहीं है। नोच फेंके लबों पे मैंने सवाल, ताकत शौकी है जवाब नहीं है। अब तो पंजाब भी पंजाब नहीं है, और खुद जैसा आप तो आप नहीं है। जख्म आबाद हैं आने जाने के, और ऐसा कोई भी हिसाब नहीं है। Sometimes the people we like don't like us back. It's painful, but there's nothing we can do about it. You don't understand. I do understand. I know what it's like when someone doesn't feel the same way about you. गम बेहिसाब थे, अलग ही वफा के ज़ाब्ते, अलग ही हैं अगर मंजिलें तो क्यों ना अलग ही रखें हम रास्ते। क्यों ना आज से मिटा दें ये किस्मत हम हाथ से, और ज़हन आज़ाद हो याद से हम मिट जाएं जा मिले खाक से। तेरे शहर भी आए पर सफ़र से ख़त्म ना हुए ये फासले। ज़ख्म भरे ना बड़े बेरहम से पेश आए हैं हाथ से बात निकाली कि तेरे दिल पे लग जाए मेरी बात कोई। तू टूटते तारों पे मांगे मुझे तुझे मयसर हो ऐसी रात कोई। I've been working a lot, लिखना नहीं छोड़ता लिखना ही तोड़ है। बिकते हैं ये गाने लाखों में, क्या ये सब पैसे का शोर है। कल साथ ना होंगे पर याद तो होगी, और बोलो ना जिंदगी क्या है। यादों की माला है, यादों के अलावा कभी कुछ बाकी रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, तेरे दरमियां बस तू ही खड़ा है। झुकाव जरूरी है, उससे जाहिर होता है कि तू ही बड़ा है। जिसे गए हुए खुद से जमाना हुआ वो तुम में भटकता है। मैं खुद नहीं हूँ ये कोई और है, मुझ में जो तुमको तरसता है। वजूद एक तमाशा था, हम जो देखते थे वो भी एक तमाशा है मेरे दिल की गुजारिश के मुझे मत छोड़ो ये जहाँ का तकाजा है। हम जिंदगी ढूंढते ढूंढते मौत के मुंह में ही जाते रहे, पर हम ठहरे कलाकार खोज में भी गुनगुनाते रहे। आओ ना कि तुम ही तो हो जीने की वजह, कि बैठे बैठे कर ही दी सुबह। ना तू आया ना ही तेरा है पता। साहिबा मैं लेने आया हूँ तेरी खबर, तू देख ले जो अब मेरी तरफ, तो हो खत्म मेरी भी ये सजा। तुम मेरी यादों में साथ हो, तुम जाके भी मेरे पास हो। तुम्हारे ही दम से जिंदा मर गया जो तुमसे फुर्सत हो। तुम मेरी किताबों की तरह हो, तुम सामने हो लेकिन बंद हो। ये दिल क्यों इरादों के जैसा नहीं कि टूटे नहीं अभी तक वो। मैंने जो चाहा वो पाया है, हुनर से घर भी चलाया है। उम्र से फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वो है जिसने बन के दिखाया है। म्यूजिक हराम वो बोले, फिर मेरे ऊपर किस खुदा का साया है। घड़ी नाराज वो खड़ी नाराज के, म्यूजिक पे क्यों इतना टाइम लगाया है। ख्वाब तो ख्वाब हैं, उनका पूरा होना कोई ज़रूरी तो नहीं है। ख्वाहिश तो ख्वाहिश है, आखिर जिंदगी भी कोई मजबूरी तो नहीं है। मुझे गम दे सोख दे, ले जा ये दिल बेशक इसे तोड़ दे। वो मोहब्बत ही क्या जो तुम छोड़ आए, वो मोहब्बत तो नहीं अगर छोड़ गए
तुम ही गुरूर थी, तुम में ही नूर था, तुम भी बेजार थी, मैं भी मजबूर था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। ये तेरी खामोशी तो क्या वो शोर था, जिससे तू मिली वो कोई और था। पर अपना मिलना भी अब मौत सा, मैं तो गानों में जिंदगी गाता हूँ, क्या पता तुम्हें पसंद हो कौन सा। आओ ना कि तुम ही तो हो जीने की वजह, कि बैठे बैठे कर ही दी सुबह। ना तू आया ना ही तेरा है पता। साहिबा मैं लेने आया हूँ तेरी खबर, तू देख ले जो अब मेरी तरफ, तो हो खत्म मेरी भी ये सजा। Keeping you close, I don't always. What we had was real. You wanna be somewhere I wanna see. Honestly, every time I've been thinking on my mind. Every time, won't you hear it's on my mind all the time? ये बाग को तू शाख मत दिखा, छोटे मुझे आंख मत दिखा। तू रोशनी मत डाल मेरी जात पे, तू सूरज को चिराग मत दिखा। हिसाब कर चुका अपने अमाल का, बेहद गुनाहगार बेहद खताकार, बहस बेकार। I'm the king of this shit। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है फिर भी लगे फिल्म, ये कितने लाइल्म है वो मेरी विजन से। वो तो हंसा करते थे मेरे जिक्र पे, बिग डॉग्स पेने 200 लिकर पे। लड़के बातें करते सारी देर I'm bigger than, उनके अज़म उनके चेहरों पे दिख रहे, पर इनकी पहुंच में ना बॉय तेरा वैसे भी। They said they're married to the game, पर ये कैसा नवा कॉम्प्लेक्स जहाँ वो चाहते numbers। It's not about the legacy, I'm that same kid। पैसे जोड़े for recordings cause I meant it, घर में स्टूडियो बनाया I don't rent it। Going in and out of city and it's hectic, एंटी अब भी करते शक कितने skeptic। तेरे फैंस को क्या याद तेरी set list, rockstar lifestyle and I'm reckless। 20 minutes in your party and I Brexit, देख mentality। I was 13 with a headphone and a handheld mic और बेतहाशा audacity। Now they keep asking me मैं कैसा करूं feel, छोटे I'm good। अभी इधर हैं तो इधर के हम बाप लोग, and when I'm gone तो कहानियां सुनाएंगे तुम्हें जो वो चले थे मेरे साथ लोग। तुझे यारों में क्या भाई मिले, भाई मिले जिनके दिलों में सफाई मिले। ना ही मिले तुझे सांप तेरे रास्ते में, तुझे जब भी मिले भाई बस दुआ ही मिले। लोगों से होता नहीं अब एल्बम का वेट, और बट एज एन आर्टिस्ट मेरी अपनी मेंटल स्टेट। और 36 बीटे 36 बातें पीठ पीछे, फीचर रेंज मंगन हो जिम में मैं वड्डा जे खोल। आई जस्ट सिट बैक एंड थिंक कितने मुझसे खार खाएंगे। Came from nothing रब की नेमत बेहिसाब भाई पे। I got everything I need, मुझे क्या चाहिए। दिल की गली में बराए करम ना आइए। I just sit back and think कितने मुझसे खार खाएंगे। Came from nothing रब की नेमत बेहिसाब भाई पे। I got everything I need, मुझे क्या चाहिए। दिल की गली में बराए करम ना आइए।
बिखरे हुए पता नहीं क्या क्या रोज चले, तू है नहीं तो फिर है नहीं ऑन द रॉक्स चले, तू गया तो फिर मजा ही नहीं महफिलों में 9 मिलीमीटर सिर्फ गैंग टॉक चले, तुझे पता साथ मेरे लोग बहुत चले, झूठे लोग इनके दिलों में ही खोट चले, ऑन माई ओन जोन डाउट कुछ पता ही नहीं, मुझे घर पहुंचाती दुआ वरना साथ मौत चले, दिल नादाम फिर भी जाम ढूंढता है, क्यों ये सूरज से मुखातिब क्या ये शाम ढूंढता है, वो तो रोज करे मेहनत इनाम ढूंढता है, बड़े काम किए बिना बड़ा नाम ढूंढता है, लेकिन मजा है ही थकान में, ये लफ्ज बने दर्द जैसे रहता परेशान में, गुलशन के फूल मुरझाने को पहुंचे मैं अक्सर भूल जाता पानी डालना गुलदान में, चीजें रहती नहीं ध्यान में, स्मोकिंग टू मच धुआं भरा है मकान में, सीधी तरह बोलू करता आसान में, मैं बड़ी बातें कर ही नहीं पाता अपनी शान में, वाह भूले अपना आप हम, अक्स देखने को हमें आईने जरूरी है, सब उलझा जैसे डोर कोई, तभी कहता हूँ मुझे लाइनें जरूरी है, लिखने बैठा तो सिर्फ गम निकलाए, रूह मेरी कब्ज क्या ये दम निकलाए, मैंने जब भी मैं लिखा वो हम निकलाए, बना ये मुकद्दर जब कलम निकलाए, ये करम निकलाए, हम बताते फिरे, वो सुनने के शौकीन हम गाते फिरे, गम इतने हुए हम छुपाते फिरे, तुम तोड़ते रहो हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे। आज लिखेंगे किताब फिर, कलम नाराज के था गई न याद फिर, शायर बने तेरी खातिर, वही ख्वाब वही जुर्म वही कातिल, दुनिया से आज इस तो बादल बनाते, ये तारे चमकते हम लहरें बहलाते, खो चुके अपने अपनों के लिए गाते, हर महफिल सजाते पर अंदर से आधे, आज भी लगे ऐसे जैसे मेरे साथ तू, कहते मुझे स्टार मगर मेरे लिए तो स्टार तू, बचे ना कोई यार तू जब ख्वाबों में शुमार तू, यारों का यार अपने यारों के लिए जान दूं, सबसे छोटा सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां, जमाना रो पड़ेगा छोड़ो ये कहानियां, आंसुओं को खुद ही आंखों से छुपा लिया, समझे मैंने खुद को पत्थर का बना लिया, कंधे भारी इतने रखेगा कोई हाथ क्यों, हम डूबे तेरे पीछे केयर गिरते कोई यूं हाथ दूं, इस कला पे है फख्र मगर दुनिया से नाराज हूं, ना समझे मेरी बात तो क्यों लफ्जों का मोहताज हूं, मैं तन्हा इस सहरा में जख्म ये गहरा खुद भरने दें, जब लोग ही मुनाफिक तो चेहरे से पढ़ लेते, सीढ़ी लगाते और उनको भी चढ़ने दे, बस्ती उजागर मेरे सिर गुजरने से, राहों से वाकिफ तो वापस भी करने दे, लफ्जों के ताजिर हैं सौदा तो कर लेते, हिप हॉप की खातिर हम उल्फत में मर मिटे, अदब बेनसीब ये अजब सा अदीब में, शायद खुदा के करीब में, अलग दिखता है इस भीड़ में, न रहा साया जिसके लिए देखे ख्वाब बड़े, लहू बहाया है तभी तो आज बेबाक खड़े, दिलों की ज़बान बने सोचों को आज़ाद करें, I don't wanna flow आजा जिंदगी की बात करें, सबर बड़ा कदर होती सबको बाद में, स्याही से जला देंगे कलम में इतनी आग है, मुंतज़िर इन तारों के जवाब के, जागू सारी रात में, I drink the pain away, pray for the better days, जिंदगी की जेल में, I hope that I stay the same, I'm out. मेरे गम मेरे गुस्से पे अब हावी रहें, आंखें जागी रहें, सोचे बागी रहें, वो राहें तो नहीं रही पर हम तो हम ही है ना, हम तो तेरे हमराही हम तेरे हमराही रहे, I fuck with these words के ये खुद ही कुछ बोल दें, ये दिल की तिजोरी के बंद राज कुछ खोल दें, जहन जेल ब्रो इससे ना रिहाई मिली, सारा शहर मेरा गवाह फिर भी ना गवाही मिली, कागजों को जो स्याही मिली, कितने लोगों को मेरी जात से हौसला अफजाई मिली, थैंक गॉड खुदा बड़ा बादशाह, वो खुदा मुझे रग रग से भी जानता, मेरी सोबतों में बैठे ही नहीं जेलसी, I hope my brothers live to be everything I could never be, a bad J or D, बैठे ढूंढे दर्द की रेमेडी, the bottle's empty and still it hurts heavily, you let it go you let it be, तो सोचो अब मैं क्या करूं, glass half full अब मैं इसमें क्या भरूं, उर्दू रैप मेरा दिल और मैं उसकी शेरग हूं, नजरिए बदलते हैं यहाँ पे लड़के कू बकू, इनको क्या खबर मैं उनके हक में कितना बेहतर हूं, एक दिन मैं लेजेंड दूसरे दिन मैं उनका दुश्मन हूं, दोनों सूरतों में लेना पड़े मेरा नाम, मैं दोनों सूरतों में ना करूं कभी कलाम, I'm on my own shit ये फोकस कभी टूटा नहीं, life on the edge I wanna go पर मैं कूदा नहीं, मेरे जुनून को जाहिल समझे शौक क्यों, सब कान लगाएं still nobody to talk to, सबसे यादगार रातें सबसे ज्यादा विविड, सबसे बड़े गमी देते सबसे ज्यादा हिम्मत, सबसे बड़ा नहीं हूँ घर का पर है बड़ा सबर, सब बताते मेरी माँ को मुझ पे बड़ा फख्र, like I already did not know, कितनी देखी परेशानियां फिर करम और नवाजिशें, बनावटी हम थे ही नहीं तो चूतिए भी ना बने, इंडस्ट्री मेरी दोस्त नहीं वो चाहे मुझसे ना मिले, मेरे यारों को इस सबर का सिला मिले, मैं कितना खुश किस्मत खरा हूँ वापस मामिले, ये रिश्ते वापस ना मिले जमे गफीर में जा मिले, ये भीड़ हमारे लिए थी और अब हम इसमें शामिल हैं, some days I shed tears for my peers, some days I miss whiskey with sadness and pain, I take risk जो वो कभी भी ना लें, and that's why I'm here.
बिखरे हुए पता नहीं क्या क्या रोज चले, तू है नहीं तो फिर है नहीं ऑन द रॉक्स चले, तू गया तो फिर मजा ही नहीं महफिलों में 9 मिलीमीटर सिर्फ गैंग टॉक चले, तुझे पता साथ मेरे लोग बहुत चले, झूठे लोग जिनके दिलों में ही खोट चले, ऑन माई ओन जोन डाउट कुछ पता ही नहीं, मुझे घर पहुंचाती दुआ वरना साथ मौत चले, दिल दा दाम फिर भी जाम ढूंढता है, क्यों ये सूरज से मुखातिब क्या ये शाम ढूंढता है, वो तो रोज करे मेहनत इनाम ढूंढता है, बड़े काम किए बिना बड़ा नाम ढूंढता है, लेकिन मजा है ही थकान में, ये लफ्ज बने दर्द जैसे रहता परेशान में, गुलशन के फूल मुरझाने को पहुंचे मैं अक्सर भूल जाता पानी डालना गुलदान में, चीजें रहती नहीं ध्यान में, स्मोकिंग टू मच धुआं भरा है मकान में, सीधी तरह बोलूं करता आसान में, मैं बड़ी बातें कर ही नहीं पाता अपनी शान में, वाह भूले अपना आप हम, अक्स देखने को हमें आईने जरूरी है, सब उलझा जैसे डोर कोई, तभी कहता हूँ मुझे लाइनें जरूरी है, लिखने बैठा तो सिर्फ गम निकलाए, रूह मेरी कब्ज क्या ये दम निकलाए, मैंने जब भी मैं लिखा वो हम निकलाए, बना ये मुकद्दर जब कलम निकलाए, ये करम निकलाए, हम बताते फिरे, वो सुनने के शौकीन हम गाते फिरे, गम इतने हुए हम छुपाते फिरे, तुम तोड़ते रहो हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे, हम निभाते फिरे। आज लिखेंगे किताब फिर, कलम नाराज के था आ गई ना याद फिर, शायर बने तेरी खातिर, वही ख्वाब वही जुर्म वही कातिल, दुनिया से आज इस तो बादल बनाते, ये तारे चमकते हम लहरें बहलाते, खो चुके अपने अपनों के लिए गाते, हर महफिल सजाते पर अंदर से आधे, आज भी लगे ऐसे जैसे मेरे साथ तू, कहते मुझे स्टार मगर मेरे लिए तो स्टार तू, बचे ना कोई यार तू जब ख्वाबों में शुमार तू, यारों का यार अपने यारों के लिए जान दूं।
हूँ सबसे छोटा सबसे ज्यादा जिम्मेदारियाँ जमाना रो पड़ेगा छोड़ो ये कहानियाँ आंसुओं को खुद ही आंखों से छुपा लिया समझे मैंने खुद को पत्थर का बना लिया कंधे भारी इतने रखेगा कोई हाथ क्यों हम डूबे तेरे पीछे केयर गिरते कोई यूं हाथ दूं इस कला पे है फख्र मगर दुनिया से नाराज हूं ना समझे मेरी बात तो क्यों लफ्जों का मोहताज हूं मैं तन्हा इस सहरा में जख्म ये गहरा खुद भरने दें जब लोग ही मुनाफिक तो चेहरे से पढ़ लेते सीढ़ी लगाते और उनको भी चढ़ने दे बस्ती उजागर मेरे सिर गुजरने से राहों से वाकिफ तो वापस भी करने दे लफ्जों के ताजिर हैं सौदा तो कर लेते हिप हॉप की खातिर हम उल्फत में मर मिटे अदब बेनसीब ये अजब सा अदीब में शायद खुदा के करीब में अलग दिखता है इस भीड़ में न रहा साया जिसके लिए देखे ख्वाब बड़े लहू बहाया है तभी तो आज बेबाक खड़े दिलों की ज़बान बने सोचों को आज़ाद करें I don't wanna flow आजा जिंदगी की बात करें सबर बड़ा कदर होती सबको बाद में से आई से जला देंगे कलम में इतनी आग है मुंतज़िर इन तारों के जवाब के जागू सारी रात में I drink the pain away pray for the better days जिंदगी की जेल में I hope that I stay the same I'm out मेरे गम मेरे गुस्से पे अब हावी रहें आंखें जागी रहें सोचे बागी रहें वो राहें तो नहीं रही पर हम तो हम ही हैं ना हम तो तेरे हमराही हम तेरे हमराही रहे I fuck with these words के ये खुद ही कुछ बोल दें ये दिल की तिजोरी के बंद राज कुछ खोल दें जहन जेल ब्रो इससे ना रिहाई मिली सारा शहर मेरा गवाह फिर भी ना गवाही मिली कागजों को जो स्याही मिली कितने लोगों को मेरी जात से हौसला अफजाई मिली थैंक गॉड खुदा बड़ा बादशाह वो खुदा मुझे रग रग से भी जानता मेरी सोबतों में बैठे ही नहीं जेलसी I hope my brothers live to be everything I could never be a bad J or D बैठे ढूंढे दर्द की रेमेडी The bottle's empty and still it hurts heavily You let it go you let it be तो सोचो अब मैं क्या करूं Glass half full अब मैं इसमें क्या भरूं उर्दू रैप मेरा दिल और मैं उसकी शेरग हूं नजरिए बदलते हैं यहाँ पे लड़के कू बकू इनको क्या खबर मैं उनके हक में कितना बेहतर हूं एक दिन में लेजेंड दूसरे दिन मैं उनका दुश्मन हूं दोनों सूरतों में लेना पड़े मेरा नाम मैं दोनों सूरतों में ना करूं कभी कलाम I'm on my own shit ये फोकस कभी टूटा नहीं Life on the edge I wanna go पर मैं कूदा नहीं मेरे जुनून को जाहिल समझे शौक क्यों सब कान लगाएं still nobody to talk to सबसे यादगार रातें सबसे ज्यादा विविड सबसे बड़े गमी देते सबसे ज्यादा हिम्मत सबसे बड़ा नहीं हूँ घर का पर है बड़ा सबर सब बताते मेरी माँ को मुझ पे बड़ा फख्र like I already did not know कितनी देखी परेशानियां फिर करम और नवाजिशें बनावटी हम थे ही नहीं तो चूतिए भी ना बने इंडस्ट्री मेरी दोस्त नहीं वो चाहे मुझसे ना मिले मेरे यारों को इस सबर का सिला मिले मैं कितना खुशकिस्मत खड़ा हूँ वापस मामिले ये रिश्ते वापस ना मिले जमे गफीर में जा मिले ये भीड़ हमारे लिए थी और अब हम इसमें शामिल हैं Some days I shed tears for my peers Some days I miss whiskey with sadness and pain I take risk जो वो कभी भी ना लें And that's why I'm here Cause I'm so in love with you. I don't need you to change. You're sublime, sublime, sublime. And I'm falling right into all the depth that I see in your eyes. You're sublime, yeah. सोच में तू खोई हुई झूठ तू ना बोल सके सच कभी छुपे ना तू कल रात रोई भी थी तू तो ठीक से सोई भी नहीं तेरे अश्क मोतियों से कम नहीं तू अपनी कीमत मुझसे पूछ तो सही
तेरा साथ अनमोल, तू तोल के बोले फिर भी हर बात अनमोल। See how I unfold, मैं दिल की बातें इस कलम से जाहिर करूं, मैं बिन कासिम इन सबको राजा दाहिर करूं, फेक लोग अपने कमरे से बाहर करूं। I got everything I need, मैं बस वाइब करूं। अब मैं टाइप करूं टेक्स्ट और फिर भेजूं नहीं, तू मेरा अक्स है मैं कैसे तुझे देखूं नहीं। दिल फरेब तू तुझसे चाहे क्यों करीबी, असल हिकमत हमें धोखे खाकर ही मिली थी। तेरी मेरी यारी बेमिसाल ही रही थी, तेरे विसाल के ख्याल में था गुम अभी। वहम था मेरा या गुजर रही थी तुम अभी, तुम मेरा नशा मेरी हाय मेरी एक्सटेसी। ये लोग नहीं है दोस्त मेरे, I'm invited everywhere, ये सब होस्ट मेरे।